किसी भी देश का संविधान ना सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं होता, वो असल में उस देश के संघर्षों की कहानी कहता है। तो आज हम भारत के संविधान की उन्हीं जड़ों को समझेंगे जो सीधे हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर किसी भी देश को एक संविधान की जरूरत पड़ती ही क्यों है? अगर आसान शब्दों में समझें तो ये समाज के लिए एक रूल बुक की तरह है जो ये तय करती है कि भाई देश चलेगा कैसे। इस बात को समझने के लिए चलिए हमारे पड़ोसी देश नेपाल का एक उदाहरण देखते हैं। नेपाल, जैसा हम जानते हैं, लंबे समय तक एक राजशाही था, लेकिन 2008 में जब वहां लोकतंत्र आया तो उन्हें एक नए संविधान की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि समाज के जो आदर्श थे वो बदल चुके थे। पुराने नियम अब नए नेपाल के लिए काम नहीं कर सकते थे। तो बात यह है कि संविधान सिर्फ रूल्स की लिस्ट नहीं है, ये उन मार्गदर्शक सिद्धांतों का एक सेट है जो बताता है कि एक देश के तौर पर हम किस तरह के समाज में रहना चाहते हैं। तो चलिए अब आते हैं भारत के संदर्भ पर। भारत के संविधान को समझने के लिए हमें पहले उस समस्या को समझना होगा जिसका ये समाधान था, और वो समस्या थी औपनिवेशिक शासन। ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है। 150 साल से भी ज्यादा समय तक भारत पर अंग्रेजों का एक ऐसा सत्तावादी शासन था जहां फैसले लेने की ताकत सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में थी, और यहीं से सारी समस्या शुरू हुई। और पता है इस शासन में सबसे बड़ी तकलीफ क्या थी? ये कि हम भारतीयों का अपने ही देश पर कोई अधिकार नहीं था। हमें ऐसे कानून मानने पड़ते थे जिन्हें बनाने में हमारी कोई राय ही नहीं ली जाती थी। मतलब आत्मनिर्णय का पूरी तरह से अभाव था। और जानते हैं, इसी बुरे अनुभव से भविष्य के लिए एक विजन पैदा हुआ। जैसा कि ये शब्द बताते हैं, गुलामी के उस लंबे दौर ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी थी कि आज़ाद भारत एक ऐसा लोकतंत्र बनेगा जहां हर नागरिक को बराबरी का हक मिलेगा। तो अब सवाल ये था कि इस लोकतांत्रिक भारत के विजन को हकीकत में कैसे बदला जाए। ये जिम्मेदारी उन लोगों के समूह को दी गई जिन्हें हम आज संविधान सभा के नाम से जानते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये दिखाती है कि ये कोशिश कितनी बड़ी थी। ये किसी एक इंसान का काम नहीं था, बल्कि ये एक सामूहिक, एक ऐतिहासिक काम था। सोचिए जरा, करीब 300 लोग, ये सब इस ऐतिहासिक दस्तावेज को लिखने के लिए एक साथ आए थे। ये सदस्य भारत के अलग अलग हिस्सों, अलग अलग भाषाओं और समुदायों से थे, ताकि जो संविधान बने वो सच में पूरे देश की आवाज बन सके। इस पूरी प्रक्रिया में पता है करीब 3 साल लग गए। दिसंबर 1946 में ये काम शुरू हुआ और लगातार बैठकों और बहसों के बाद नवंबर 1949 तक स्वतंत्र भारत के लिए एक मजबूत संविधान तैयार कर लिया गया। और ये देखिए, इस तस्वीर में हम इस प्रक्रिया के एक बहुत ही अहम सदस्य जवाहरलाल नेहरू को सभा को संबोधित करते हुए देख सकते हैं। उनकी जैसी आवाज़ों ने ही इस पूरी बहस को एक दिशा दी और इसे एक मानवीय चेहरा दिया। तो इस पूरे स्वतंत्रता संग्राम से हमें कौन से बड़े आदर्श मिले? लोकतंत्र, क्योंकि हम सत्तावादी शासन देख चुके थे। समानता, क्योंकि हमने भेदभाव झेला था। हर वयस्क को वोट का अधिकार, क्योंकि हमारी आवाज दबाई गई थी। और हाँ, धर्मनिरपेक्षता। ये सारे विचार सीधे सीधे औपनिवेशिक शासन के अन्याय की प्रतिक्रिया के तौर पे उभरे थे। चलिए, अब संविधान की सबसे महत्वपूर्ण और थोड़ी जटिल विशेषताओं में से एक यानी धर्मनिरपेक्षता को थोड़ा गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले इसकी सीधी साधी परिभाषा क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब है कि सरकार की नज़र में कोई भी धर्म ऑफिशियल नहीं है। मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। अब सवाल ये है कि धर्म और राज्य को अलग रखने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके 2 मुख्य कारण थे। पहला, एक धर्म दूसरे धर्म पर हावी न हो जाए, और दूसरा, एक ही धर्म के अंदर कोई एक समूह दूसरे समूह पर हावी न हो जाए। अब ये जो एक ही धर्म के अंदर वर्चस्व की बात है ना, इसका एक बहुत साफ उदाहरण है छुआछूत की प्रथा। हमारे संविधान ने इसे खत्म कर दिया ताकि एक ही धर्म के भीतर कुछ ऊंची जातियां नीची जातियों पर अत्याचार न कर सकें। लेकिन भारत की धर्मनिरपेक्षता सिर्फ धर्म और राज्य को अलग रखने तक ही नहीं रुकती। यहाँ एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया गया जिसे सैद्धांतिक दूरी या प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस कहा जाता है। तो ये सैद्धांतिक दूरी आखिर है क्या? इसका मतलब है कि राज्य धर्म से दूर तो रहता है, लेकिन अगर कोई धार्मिक प्रथा संविधान के आदर्शों जैसे कि समानता,
का उल्लंघन करती है तो राज्य उसमें दखल दे सकता है। चलिए इसे और साफ करते हैं। एक तरफ राज्य धर्म से अलग रहकर हर धर्म की आज़ादी का सम्मान करता है, लेकिन दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पर वो हस्तक्षेप भी करता है, जैसे कि छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई पर रोक लगाना या फिर धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने संस्थान चलाने में मदद करना। तो इसे ऐसे समझिए, ये 2 स्टेप का एक सिंपल सा प्रोसेस है। पहला, दूरी बनाए रखो, और दूसरा, लेकिन अगर संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन हो तो सुधार के लिए कदम उठाओ। और ये सारी बातें, ये सारे आदर्श इस एक दस्तावेज में समाये हुए हैं, हमारा भारत का संविधान। इसकी हर एक लाइन दशकों के संघर्ष और गहरे सोच विचार का नतीजा है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक बहुत दूर की सोच रखने वाला दस्तावेज है। ये एक साथ विविधता का सम्मान करने और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने का एक नाजुक संतुलन साधता है। तो जाते जाते हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहेंगे। आज़ादी के संघर्ष से निकले ये आदर्श आज की चुनौतियों के बीच हमारे देश को कैसे दिशा दिखाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना 75 साल। Imagine this. You have to write the rules for a country of over 1 billion people. I mean, where would you even begin? Well, today we're diving into the incredible story of India's constitution, the official rulebook that guides one of the biggest and most diverse nations on earth. So, let's start with something you already know. Think about your favorite game. Is it cricket, football, maybe even a board game like chess? Whatever it is, it has rules. And those rules are exactly what make the game fair, right? And fun. If you tried to play without them, it'd just be total chaos. Yeah, exactly. That wouldn't be a fair game at all, would it? The rules have to be locked in, and they have to apply to everyone. Well, in a lot of ways, a country is kind of like the biggest, most important game of all, and it needs a rock-solid rulebook that every single person can trust. All right, so here's our game plan for today. First, we'll get into what a constitution actually is. Then we'll take a trip back in time to see how India's was forged. After that, we'll see how it protects against the misuse of power. We'll unpack the idea of secularism. And finally, we'll look at India's really unique approach to it all. Okay, first things first. Let's talk about what we mean by a country's official rulebook. Why does every country even need one? But you know, this isn't just a list of do's and don'ts. A constitution goes way deeper than that. It's kind of like the soul of a country. It sets out the type of government it'll have, and more importantly, it spells out the big ideals, like freedom, equality, and justice, that it promises to all of its people. And this isn't just some abstract idea. This happens in the real world. Just take a look at India's neighbor Nepal. For a long, long time, it was a monarchy, ruled by a king. But the people decided, hey, we want a democracy. The old rulebook just didn't work for the country they wanted to build, so they fought for a new one that actually reflected their dreams. And just like in Nepal, India's rulebook was also born from this massive desire for change. Its origin story is completely intertwined with the nation's long, hard struggle for freedom from British rule. Think about that for a second. After a century and a half of being told what to do, this was a massive moment. A group of about 300 brilliant Indians, called the Constituent Assembly, finally got the chance to decide for themselves what kind of nation India was going to be. And just look at them. This wasn't some quick meeting they wrapped up in an afternoon. No way. For 3 whole years, these men and women debated every single idea, every word, every comma. Their job was just enormous. Build a single, democratic nation for a country with hundreds of languages, countless different cultures, and pretty much every major religion you can think of. You see, after decades of being ruled by others, they knew exactly what they didn't want. They didn't want kings or foreign rulers. They wanted a democracy, a system where every single citizen was equal. All those ideals they had fought so hard for were finally being written down into law. Now this brings us to a really critical job of the Constitution, making sure that power can't be misused and that the rules apply to everybody, especially the people at the top. I mean, think about it. In a democracy, we vote for leaders to have power. But what's to stop them from using that power unfairly? Well, that's where the Constitution comes in. It's like a safeguard, a check on their authority, to make sure they're serving the people, not themselves. Okay, to see how this works, let's look at a really simple example. Here's a classroom. The teacher needs to step out for a minute, so she puts the class monitor, a boy named Suresh, in charge. He's just been given a little bit of power.
But watch what he does with it. Suresh decides to use his new authority to pick on another student, Anil, just because he doesn't like him. See, this isn't about keeping the class quiet anymore. This is just plain bullying. And to make it even worse, when the teacher comes back, Suresh tells her a complete lie, and poor Anil, who did nothing wrong, gets punished. That, right there, is a perfect, simple example of an abuse of power. Now, just imagine that wasn't a class monitor, but a politician. The Constitution's job is to put rules in place to stop that from happening. And this protection isn't just about one person against a leader. It's also about protecting smaller groups from bigger ones. The Constitution ensures that just because one group has more people, they can't just vote to take away the rights of a minority. It's a defense against something called the tyranny of the majority. So, this idea of protecting all groups, big and small, leads us right to one of the most important features of the Indian Constitution, secularism. But what does that word actually mean? At its core, secularism just means the government, or the state, stays neutral on religion. There's no official religion of India. The government can't promote one faith over another. The whole point is to make sure every citizen is treated exactly the same, no matter what they believe or don't believe. Now, this separation is super important for two big reasons. The first is to stop one religious group from dominating or controlling another. But it also does something else, something a little more subtle. It can also stop powerful members inside a religion from oppressing other members of their own faith. And that leads us to our final section, because the way India puts secularism into practice is, well, it's pretty unique and really clever. It's not just about staying away. A powerful real-world example of this is the historical practice of untouchability. For centuries, so-called upper castes within Hinduism oppressed lower castes. This was a clear case of domination within a single religion. So instead of just looking away, the Indian Constitution stepped right in and banned the practice. That's the government intervening in a religious social practice to protect equality. This chart sums it up perfectly. This unique strategy is often called principled distance. So think of it this way. On one hand, the state keeps its distance from religion to protect everyone's freedom to believe. But on the other hand, if a religious practice is actively harming people or creating inequality, the state can step in to stop it. It's this incredible balancing act between freedom and fairness. So as we've seen, the Indian Constitution isn't just a boring legal document. It is a truly visionary blueprint, designed to hold together one of the most diverse countries in the world, respecting all those differences while at the same time building a strong, unified, democratic nation. And that leaves us with one final question for you to think about. If you had to write the single most important rule for your school, what's the one big ideal you would want to protect more than anything else? Would it be freedom, fairness, equality? It's a tough choice, but it's exactly the kind of question the people who write constitutions have to answer. Thanks for joining this.